अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड konnichiwa एवरीवन। आज ये मेरा दूसरा व्लॉग है एंड इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू पाकिस्तान टुमारो एक्चुअली। तो आज के दिन हम कुछ तैयारी करेंगे पाकिस्तान जाने के लिए, कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ कंपनी में काम करेंगे एंड देन आई विल शो यू माय डे, हाउ आई स्पेंड माय डे टुडे। और कल का दिन भी आपको इसी व्लॉग में मिलेगा क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू मेक अ व्लॉग but life काफ़ी busy है, so that's why I couldn't get time to make a vlog, but now मैंने सोचा कि यार I have to make another vlog as well जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्यूटी चलती है। अभी जापान में सर्दी है एंड वो सर्दी है क्योंकि अब देखिए अब हम जा रहे हैं यार की तरफ। कद्दू किधर से जो हमने कद्दू लगाए हुए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, हमारे यहाँ पे कद्दू भी लगे हुए हैं। अभी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मुझे जुकाम लगा हुआ है, इसलिए ये छोटा ये उतारे छोटा कद्दू, वो बड़े वाला भी लगा हुआ, वो देखिए वो सामने लगा हुआ बड़े वाला, कुछ नजर नहीं आ रहा इस बात। ये कद्दू है, इसको हम उतारेंगे अब। ये तुरंत नहीं जा रहा है, इसके लिए क्या लेने के लेना पड़ेगा भाई सामान? क्या कहाँ पड़ी है दातरी यार, कहाँ पड़ी हुई है? अच्छा बाकी अभी अब लेट हो रहे हैं, इसलिए हमें भाग के ना और उनसे अगर हम लेते हैं ये अपनी दातरी। यार यहाँ तो बहुत गंद पड़ा हुआ है, ये पड़ी है दातरी मेरी, इसलिए हम उतारेंगे कद्दू। यार दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा, अब हम उतारते हैं कद्दू। काफ़ी ये घास होगी है लेकिन इसको हम साफ़ करेंगे किसी दिन। अभी कद्दू उतारते हैं। ये चीज़ कद्दू एक बोल बेस बात, वन इज इनफ। इसको भी हम रखेंगे यहाँ पे। तो जी अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए अपने एक जापानी दोस्त से, उसके बाद दूसरे काम करेंगे। तो नाज़रीन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कल पाकिस्तान जा रहा हूँ और पाकिस्तान जाने से पहले ही एक जापानी दोस्त हैं, उन्होंने एक गाड़ी थी उनके पास, वो उन्होंने दी है, वो भी लेके जाऊँगा। ये गाड़ी है आपको पता, ये वाली कार, ये मैंने ली है 2 लाख येन की। और अगर इसकी जो प्राइस यहाँ पर मार्केट प्राइस है वो है इसकी तकरीबन 4 लाख येन। लेट्स गो। ना गाड़ी ठीक है, गाड़ी में सनरूफ भी है और कार इज गुड। अब चेक करते हैं चली कितनी हुई है माइलेज इसके। इसका माइलेज बहुत कम है तकरीबन। तो जी अभी हम पहुंच गए अपने यार्ड पे, कंपनी पहुंच गए हैं। अभी कार को पार्क करेंगे इधर एंड देन विल गो टू अनदर वर्क। अभी यार्ड पे पहुंच गए हैं, अब गाड़ी को इस तरफ पार्क करते हैं पार्किंग में, तो उसके बाद लेट्स डू अदर थिंग्स।
दिन हम आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। ये भाई स्मान और यू गाइस भाई बाकी तरफ वो भाई ब्रार आ रहे हैं पीछे। भी आप भी हेलो कर देना। हेलो कर दे नाजरीन को। तो अभी हम यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, कुछ चीज़ें लेंगे पाकिस्तान की जो कल जाना है सुबह। यार ये इसको कैमरे को ऊपर रखो ऐसे। ये ऐसे ऊपर आ जाता है। यार हमारे लिए चैलेंज है, जी तो यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। पहुँचने ऊपर पहुँच सकते हो। नहीं नहीं पहुँच सकता। अगर तुम पहुँच गए हाँ हाँ जी अगर तुम इधर से ऊपर पहुँच गए हाँ। तो जो तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये मुझे गिफ्ट चाहिए। चले यार। तो अभी का व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। अभी सुबह के 5 बजे हैं और मेरी अभी फ़्लाइट है पाकिस्तान के लिए। आई विल टेक द बस एंड विल गो टू द एयरपोर्ट एंड देन आई विल शो यू गाइस। तो जी नाजरीन अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बस यहाँ से लेंगे जो हदीदा एयरपोर्ट में छोड़ेगी। उसके बाद फिर अगला सफ़र शुरू होगा और अभी हम तकरीबन थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। अभी जो टाइम है वो तकरीबन 6 बजने वाले हैं और 6 बजकर कितने बजे हमारी जो है 6:15 में हमारी यहाँ से बस चलेगी। तो बाकी का सफ़र आपको बस में दिखाते हैं। तो जी गाइस अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ नहीं, क्योंकि अभी हमने जो बस है। अच्छा गाइस एक और बात है कि आज हरून साहब जा रहे हैं, जापान को छोड़ रहे हैं और इसी चक्कर में जो है ना हमारा यहाँ का मौसम जो है वो गमगीन हुआ हुआ है। गमगीन नहीं यार, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अभी हमारा जो टाइम है बस का वो भी तकरीबन रहता है, तकरीबन 15 मिनट रहते हैं और अभी बस पूरे टाइम पहुँचेंगे। तो ये हमारी बस जा रही है जो कि अभी हम लेट हो गए। लेट नहीं हुए, हम बैठे हुए थे गाड़ी में लेकिन हमने बस को नहीं देखा। तो बस वालों ने नहीं देखा कि बंदा भी इंतज़ार कर रहा है। अब इस बस के पीछे लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बस को कैच करके इसमें बैठा जाए। अभी 6:22 हो गए हैं। 6:15 में हमारी बस थी और वो हमारी बस आ गई और हम इस बस के पीछे हैं। So after all we got the bus and now I'm heading toward airport, so let's see there. तो गैस मेरी जो फ़्लाइट है वो मिस हो गई है एंड तो जी नाज़रीन आज की जो हमारी फ़्लाइट थी वो मिस हो गई और उसके बाद काफ़ी मसला हुआ। मिस होने की वजह ये थी कि जो बस थी वो हमारी जिस बस में मैं आया था, जो आपको दिखाया कि जो बस पहले हमने मिस कर दी, वो बस तो हमने पकड़ ली लेकिन जो बस थी उसने हमारी जो फ़्लाइट है वो मिस करवा दी। अब उस चक्कर में ये हुआ कि अब कल दोबारा फ़्लाइट मैंने बुक करवाई है। उसमें एक और मसला आ रहा है कि अब जो फ़्लाइट होगी इसमें तकरीबन 23 घंटे स्टे होगा चाइना में और वो काफ़ी मुश्किल चीज़ है अगर आप सिर्फ एयरपोर्ट में स्टे करते हैं 23 घंटे। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल दोबारा या वीज़ा मिलता तो वीज़ा बंदा उसका चाइना के लिए कि उसको थोड़ा विज़िट करेंगे और होटल बुक करवाएंगे तो फिर दोबारा पाकिस्तान। चलें अब मिलते हैं कल, अभी आज के लिए बहुत काम हो। दिन सफ़र करने के बाद आई वॉज फीलिंग हंग्री, सो आई जस्ट फाउंड अ रेस्टोरेंट नियर टू माई होटल and I thought I should recover my energy, so let's eat something. जी सुबह बखैर सब लोगों को गुड मॉर्निंग।
अभी सुबह का टाइम हो गया, यहाँ पे तकरीबन 6:40 का टाइम हो गया। और आज मैं जाऊँगा 8 बजे, क्योंकि फ्री शटल सर्विस होगी यहाँ से फिर से। तो आपको मैं अपने कमरे का छोटा सा रिव्यू करवाता हूँ जो मैंने रात को बुक करवाया था। तो ये ना इसकी एड्रेस है, यहाँ से एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद यहाँ पे ये हेयर ड्रायर्स और सामने छोटा सा एक बेड, कपड़े हैंग करने यहाँ पे कर सकते हैं। ये छोटा सा बेड है और साथ ये टेबल चेयर और ये एसी, लेकिन छोटा सा कमरा, लेकिन इट वाज गुड। और वॉशरूम इसका आपको चेक करवाते हैं। ये वॉशरूम है ना, छोटा सा वॉशरूम, वो जकूज़ी बनी हुई, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। ये इफ़ यू वांट टू टेक शावर। अब चेकआउट करते हैं। लेट्स गो बैक टू एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में मिलते हैं आपको। Welcome. Please insert your room card. A query is in progress. Please wait a moment. Please wait a moment. Thank you very much for your stay. I got my boarding pass and now I'm going to boarding area. तो जी ना, अभी जो हमारा सफ़र था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग क्लियर होने के बाद अब चाइना का सफ़र है। और चाइना में तकरीबन मेरे हैं 23 आवर्स स्टे। और वो स्टे देखने के लिए आपको अगली वीडियो देखना पड़ेगी, हाउ टू स्पेंड 23 आवर्स इन चाइना। तो अब मिलते हैं आपको चाइना में। खुदा हाफ़िज़। So now I'm just going to get my plane and see you guys next video. See you in China. Bye.
So guys, I just finished my breakfast and it's been almost 10 hours I'm staying here and still more to go. अभी फ़िलहाल 23 घंटे मुझे स्टे करना था यहाँ पे and I still have 13 hours and after that I will show you that where we go and how this happens, but it was difficult if you didn't get the visa here. तो ट्राई करें अगर आप यहाँ पे अगर लंबा स्टे है तो you should apply for the visa first and then you can access to the hotel which are outside the airport actually. So be careful. I couldn't make videos because my phone was off and yeah, so please watch our video and if you need any kind of assistance regarding to anything, so I would be happy to help you. Thank you. So let me show you the place where I'm resting today. So here is the footrest where you can put your legs there and can lay down here as like that. So this is my hand curry and here the people are taking rest, so I can take rest here as well and enjoy the view as well. The view is good. So if you came to China, you can find a place like this one and you can lay down over here and can enjoy the view. So now we are going to take the plane. Our gate number is 161, so I'm just heading toward my boarding place, so let's see you there. So guys, I'm at my boarding place. The plane will be take off around 5 p.m. and I still have 3 hours to stay, and then I will be in Pakistan after 6 hours. At this moment, I got a relief that I reached in Pakistan. Ladies and gentlemen, welcome to the Layover. The outside temperature is 30 degrees Celsius or 86 degrees Fahrenheit. The local time is 7:22 p.m. तो गाइज़ यहाँ पे हमारा सफ़र होता है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।